Good morning, students. Students, in our today's video lecture, we would resume our topic force. This chapter we have started earlier, and you can revise all the video lectures which I have made earlier about force topic, and where we have studied Newton's first law, inertia, momentum, and in today's lecture we would start the topic which is Newton's second law. We have to study Newton's second law. Newton's second law. Newton's second law. Students, Newton's second law, we have seen that in the previous video lecture we have find rate of change of momentum. We have find rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum. So you know that momentum small p is denoted as small p, and momentum is mass into velocity. Mass into velocity. So momentum, we have to find change of momentum. Change of, so for change we denote delta p, final value minus initial value. So final momentum p final minus p initial, p final minus p initial, and final mass into final velocity minus mass into initial velocity. Here you can take common mass and v minus u. So this is delta p, change of momentum. Here you are saying that this is the rate. So for rate you would divide this quantity by delta t. So it would become this. Now v minus u. You are saying here v minus u is change in velocity. So you can write it as m delta v upon delta t. And you know that what is delta v upon delta t? It is acceleration. So it would become ma. It would become ma. So you can say that delta p upon delta t is equal to ma. This relation we have studied in the previous video lecture. You can revise it from here, and also I will study here. Now students, what is Newton's second law? Newton's defined that the rate of change of momentum, the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force on the object. Is directly proportional to the applied force on the object. So, if the force applied is F, if the force, net force, we will talk about net force. If the net force is F, then the net force is directly proportional to rate of change of momentum, delta p upon delta t. F is proportional to delta p upon delta t. This statement belongs to Newton's second law. The rate of change of momentum is directly proportional to applied net force. Now, the direction of the force is in the direction of the change in momentum, in which the momentum is, linear momentum is. So, where the force is, where is the momentum? There is the momentum. Now, we know, हम लोग जानते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं और यहाँ पर इक्वलिटी लगाते हैं, तो we would place a constant. Here the constant is suppose k. So इक्वलिटी लगाई, constant इंट्रोड्यूस किया, delta p upon delta t, and the value of this constant term is found experimentally, and the value here k equal to 1. Experimentally it is found k equal to 1. So f becomes f equal to delta p upon delta t. So this is the mathematical relationship between the force and the rate of change of momentum, and also we have seen here that it is equal to ma. So from these two equations we can say that f equal to ma. We can say that f equal to ma. This is a very important equation for solving the numerical problem of this chapter force. In this chapter we could solve maximum numerical problem by this mathematical formula f equal to ma, where m is the mass of the object and a is the acceleration of the object. So
Newton's second law is the qualitative. It is qualitative in nature because here we have found a mathematical relationship between the applied net force, mass and acceleration produced in the object. It means when there is an acceleration in the object, there will be a net force. From this equation particularly F equal to ma. From F equal to ma. From this equation, student, F equal to ma, you can say that if there is an acceleration in the object, it means there is a net force. This is the F net. You can say this is the F net force. And we have already talked about the net force in our previous video lecture. What is the resultant force and net force on any object? ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख चुके हैं. If the net force is zero, if the net force is zero, suppose the net force is zero, it means object is in balance situation. We have talked about balance and unbalanced forces. So the object is in balance situation and we can say 0 equal to ma. Because mass of the object cannot be zero, it means definitely acceleration of the object would be zero. So acceleration is equal to 0. From this we can conclude if f not equal to 0, then acceleration a equal to 0. Then what it results, what it concludes? It concludes, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा. ये आप इस रिलेशन से देख पा रहे हैं क्लियरली. अब यहाँ पर पहला मतलब एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये या तो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, इन रेस्ट. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, in that case acceleration would be 0. Second condition is what? Object is moving with uniform velocity. Object is moving with uniform velocity. If the object is moving with uniform velocity, means constant velocity, then also acceleration is 0. It means at that position, at that situation, the net force on the object is also 0. Okay. Uniform velocity means constant velocity, means object is moving with a constant velocity in a same direction. So then the motion is uniform and net force is 0 and acceleration is also 0, because acceleration is what? Change in velocity upon time interval, and the change in velocity is 0 because the object is moving with constant velocity, then the change is 0 and this is 0, numerator is 0, then a equal to 0. Okay. So you can say this is the Newton's. Here this statement is defining the Newton's first law. Here we are proving the Newton's first law from the Newton's second law. कैसे? इसको देखिए. Newton's first law states that if the object is at rest or it is moving with uniform velocity, it would remain in rest and it would remain moving with uniform velocity until and unless there is a net force on the object. मतलब अगर जब तक नेट फोर्स नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. तो ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, जो कि न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन से क्या हो रहा है यहाँ पर प्रूफ किया जा रहा है. ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ. So this is all about Newton's second law. We have studied in today's lecture what is Newton's second law. Newton's second law states that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied net force on the object. And from here we can find this relation F equal to ma, which is very important for numerical point of view. And we have also proved the Newton's first law from the Newton's second law equation. So this is all about today's lecture. Thank you, students. We will meet in the next video lecture. Hello everyone, myself Jinjan Tripathi, chemistry teacher of Shivaji Group of Institution. Student, today we are going to explain a new chapter, that is atomic structure and chemical bonding. In this chapter, student, definition of atom and structure of atom means what is the actual structure of atom and by which manner these atoms are combined to form a compound. This is all about in this chapter introduction. Now student, first of all
we are explaining atom. Atom during the Vedic period, Mahesh Khan put forward the definition of matter. Smallest unit of matters is that Anu or Padma. Means during the ancient time, Mahesh Khan explained that matter made up of a small number of units. These units are known as Anu or Parmanu. After this period, in 1808 time period, John Dalton sir put forward atomic theory by which explaining atom and giving the some assumption about the atom. First one is that matters consist of small indivisible particles. These are called atom. Means each and every matter made up of a small number of indivisible. Do you know the meaning of indivisible? Means further division is not possible. Indivisible particles. These are called atom. Means atom is the smallest unit of matter. Okay. So this one is the first assumption of John Dalton atomic theory. It's okay. Now, second point is that atom of same elements are alike in all respect. In all respect means physical, chemical properties of the atom of same element. For example, we take an example of sodium. Element sodium consists of a lot of number of atoms. All the atoms of sodium are same in all matter, means density, melting point, number of electron, number of proton, number of neutron, and chemical reaction related with the sodium are same. This sodium react in everywhere. In physical property or in chemical property, this is so same property. In all respect means all the properties of sodium are same. Okay. Now, third one is the atom of different element like sodium and chlorine. These are two different elements. Atom of these elements are different in all respect. Means properties of sodium and chlorine are different in all manner. Physical property and chemical property and reaction of the sodium and chlorine are different. This one is a metal, this one is a non-metal. Okay? Why these atoms show different property? Due to the structure of atom of both the elements are different. That's why these two different elements show different property. Okay? Now, fourth one is that atom combined in whole number. Whole number is 1, 2, 3, 4, like that. Not a fraction like 1.5, 2.75, 2.25, like that. These are not a whole number. Atom combined in whole number to form molecule. Molecule means 2 atoms of sodium, 4 atoms of sodium, 5 atoms of sodium, 2 atoms of oxygen to form a molecule of oxygen. So it means atom combined in whole number
to form a molecule. Okay. Now, fifth one is the atom is the smallest unit of matter which take part in a chemical reaction. Means in each and every reaction, atom take part in reaction. That reaction means smallest particle of matter take part in a chemical reaction. For example, sodium react with chlorine to form sodium chloride. In this reaction, atom of sodium react with atom of chlorine to form a molecule of sodium chloride. So that atom is the smallest unit of matter which take part in a chemical reaction. Means chemical reaction proceed by the atoms. So this one is the John Dalton atomic theory put forward in 18th century. After that, this theory, modern atomic theory put forward by the scientists. In that theory, only this point, indivisible, change the whole concept of John Dalton atomic theory. In modern theory, atom breaks up in a number of small particles, that is electron, proton and neutron. In modern atomic theory, atom is a divisible particle and breaks up into some fundamental particle like electron, proton and neutron. Okay, this is the divisible part of the atom. Means atom breaks up into electron, proton and neutron. Student, this is all about today. In next class, we are explaining how this atom breaks up into electron, proton, neutron, and how will you discover these fundamental particles of the atom, electron, proton and neutron. Okay, this is all about today. Hello everyone, welcome in our biology class. So today I am going to start a new chapter which is a lesson 3, the flower. So first question is, what is the flower? A flower is a conspicuous structure in all angiospermic plants. Angiospermic plants means those plants which bear flowers in their structure. Second thing, flowers are especially designed for reproduction. Reproduction means giving birth to young ones, the similar copy of the individual. So for reproduction, the plant is a very important structure because it is especially designed for reproduction only. Third thing, it is a modified shoot. What is shoot? The plant is divided into two parts, root and shoot. Root, the part which goes under the ground, and shoot, the part which goes above the ground. So the modified part of shoot is known as flower. And the last thing, that flowers develop as a branch from a bud. From a branch, first of all, a bud appears, and after that bud, flowers came out from that. Now, let's discuss about parts of a flower. So, there are 4 important parts of a flower, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. So, first of all, let's talk about calyx and corolla. Calyx and corolla are known as accessory or non-essential parts of a flower. Why they are known as accessory or non-essential parts? Because
they provide protection in bud. When flower is in bud stage, the protection was given by calyx and corolla, and also it helps in attraction of insects. As you all know that insects are attracted towards flower, they serve nectar from the flower and they are helpful for the pollination. So attraction of insect is also done by calyx and corolla. And when we talk about androecium and gynoecium, so these are reproductive or essential part of a flower. Why these are known as reproductive or essential? Because they help in production of male and female gametes, and with the help of gametes, seed formation takes place. Now let's discuss about world's smallest and largest flower. So world's smallest flower is Wolffia microscopia, which is only 0.1 mm of diameter, and world's largest flower is Rafflesia, whose diameter is approximately a meter. Now let's discuss about one more part of a plant flower, which is known as pedicel. So pedicel is a stalk on which flower is born. That means a line in which flower takes place. That stalk is known as pedicel. And pedicel is swollen at its apical end. And next thing, the swollen tip of pedicel is known as thalamus or receptacle. And all floral whorls, that means calyx, corolla, androecium and gynoecium, arises from that receptacle only. And some flowers are known as sessile. Which flowers are known as sessile? Those flowers which lack a stalk, that means which lack a pedicel, is known as sessile flowers. And now the question is, what is the sequence of parts of a flower? So sequence of a parts of a flower from outside to inside is that in the outside part, first of all, calyx is present, after that corolla, and then androecium, and at the inside of a flower, gynoecium is present at the end. So students, हम flower chapter की बात करें, सबसे पहले what is flower? Flower एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, और जिन प्लांट्स में फ्लावर प्रेजेंट होता है उसमें फ्लावर ही उस प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है. फ्लावर्स स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फ्लावर. एंड नेक्स्ट थिंग, इट इज अ मॉडिफाइड शूट. शूट क्या होता है? प्लांट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रूट एंड शूट. रूट वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड शूट वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट होता है. तो जो ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है उसमें मॉडिफाई होता है, वो मॉडिफिकेशन को ही बोला जाता है फ्लावर. एंड डेवलप कहां से होता है? डेवलप्स एज अ ब्रांच फ्रॉम अ बड. ब्रांच से एक बड निकलता है, आफ्टर दैट बड से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट थिंग, अगर हम पार्ट्स की बात करें कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. कैलिक्स और कोरोला को एसेसरी या फिर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर बोला जाता है. नॉन एसेंशियल क्यों होते हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया कि फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन में, बट कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका काम क्या है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन बड. जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, कली जब उसमें होती है, तब उस टाइम पे ये उस बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ जो अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स हो रहा है, इंसेक्ट फ्लावर्स आके नेक्टर को सक करते हैं, जो आफ्टर पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल होता है, उस अट्रैक्शन के लिए कैलिक्स और कोरोला रिस्पॉन्सिबल होते हैं. बट इनका रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, और क्योंकि रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्लावर बोला जाता है. इसी जगह अगर हम बात करें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम की, तो इनको हम रिप्रोडक्टिव या फिर एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं. ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. जो मेल गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, जो फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो रहा है, ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. एंड व्हेन दीज गैमेट्स कंबाइन तब इनसे सीड का फॉर्मेशन होता है. अगर हम वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें, तो वर्ल्ड्स का स्मॉलेस्ट फ्लावर है वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया, जिसका डायमीटर सिर्फ 0.1 mm का होता है. ये डकवीट होता है, बेसिकली वाटर बॉडीज के ऊपर ही ये फ्लोट कर रहा होता है. एंड लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो लार्जेस्ट फ्लावर रॉकलेशिया है, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर अराउंड होता है. प्लांट का एक और पार्ट भी होता है जिसको पेडिसल बोलते हैं. पेडिसल क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसपे फ्लावर बॉर्न होता है.
जिस लाइन से वो जुड़ा होता है उसी लाइन को पेडिसल बोलते हैं। और वो पेडिसल एपेक्स में स्वोलन होती है, मतलब कि थोड़ी मोटी हुई होती है। इस स्वोलन टिप को बोला जाता है थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं जैसे कि कैलक्स, कोरोला, नोशम, गानोशियम, ये सब उसी थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल से बॉर्न होते हैं। और उन फ्लावर्स में जिसमें पेडिसल प्रेजेंट नहीं होता है, स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है, फ्लावर डायरेक्टली अटैच्ड होता है, उन फ्लावर्स को सेसाइल फ्लावर्स बोला जाता है। एंड द लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू कि जो सीक्वेंस होता है फ्लावर के पार्ट्स का, कैलक्स, कोरोला का, आउटसाइड से इनसाइड, तो आउटसाइड सबसे पहले कैलक्स प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कोरोला प्रेजेंट होता है, उसके बाद एंड्रोशियम होता है, एंड एट द एंड वहां पे गायनोशियम प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi. Students, you are most welcome once again. I think definitely you must have enjoyed your holidays. But now it's time to start your studies. Students, today I am going to explain you poem number 1 in English literature, and that is The Heart of a Tree. So students, take out your book, Trezetto Poetry section, and first of all you have to take out your workbook. I will explain all the details. Introduction of the poem, introduction of the writer of this poem. So first of all, take out your workbook and let us start it. The poem is titled as The Heart of the Tree. The heart of the tree, you know, heart means दिल, हृदय, of the tree, पेड़, पेड़ यानी वृक्ष का heart. This is the title of the poem and written by Henry Cuyler Bunner. The writer or poet of this poem is Henry Cuyler Bunner. Okay? Let us see about its author. Briefly, I will describe you about the author. It is given in your workbook. Henry Cuyler Bunner was a well-known American novelist. हेनरी कायलर बनर एक जाने माने अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, एंड अ ग्रेट पोएट, और एक महान कवि भी थे. ही वॉज बॉर्न इन ऑस्वेगो, न्यूयॉर्क ऑन अगस्त 3rd, 1855. ओके, इनका बर्थ ऑस्वेगो, न्यूयॉर्क का एक टाउन है, 3rd अगस्त 1855 को हुआ था. ओके, एंड ही रिसीव्ड हिज एजुकेशन इन न्यूयॉर्क सिटी. उनकी अर्ली एजुकेशन न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी. ही गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एज द एडिटर ऑफ ह्यूमर मैगजीन कॉल्ड पक. उन्होंने बहुत बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी एडिटर के रूप में एक इंग्लिश मैगजीन जिसका नाम क्या था, पक. ओके, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर. डेफिनेटली इन द एग्जाम देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर और ऑथर, बट यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इट क्लियरली. नाउ स्टूडेंट्स, in your workbook, see about the poem. That means introduction of the poem. Before reading a poem or any topic, you must know well what is given, what is the description given in the poem or particular topic. Before reading the poem, you must know well everything about it. Only then you can understand it well. This is very important poem for you. Let us start it about the poem. Okay, try to understand seriously and see all the difficult words meanings clearly.
The heart of the tree by Banner focuses on attention on the value of tree planting. Okay, here writer talks about the importance of tree plantation in our life. इस पोम में राइटर ट्री प्लांटेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करता है एंड सेज हाउ इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रीज प्ले in our life. We know how our indiscriminate felling of trees has led to environmental disaster in our times. We know how our indiscriminate means not doing something judicially. Indiscriminate अंधाधुंध लगातार. Felling means cutting. Trees has led to environmental disaster. Environmental disaster means environmental calamities, environmental sufferings, environmental pollution. यानी लगातार पेड़ों के कटान की वजह से हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, डैमेज हो रहा है, नष्ट हो रहा है. दिस शुड नॉट बी डन. Divided into 3 stanzas. Students, in this poem, there are only 3 stanzas. The poem tells us of the various benefits of planting a tree. And in this poem, the poet tells about benefits, importance of the trees, the role of the trees in human life, as well as in the whole atmosphere. Each stanza opens with the same question. Okay? In this poem, each stanza begins with the same question. हर स्टेंजा की शुरुआत में एक जैसा प्रश्न किया गया है. What does he plant? Who plant a tree? Okay? Each stanza, the first line of each stanza begins with the line. What does he plant? Who plant a tree? This is a question. जो व्यक्ति एक पौधे को जमीन में लगाता है तो पौधा लगाने के अलावा वो क्या करता है? That means how important role plant can play in our life. He doesn't plant only a single plant, but does various things which are very useful for all the living beings in this whole universe. The answer is provided by the poet himself. हर स्टेंजा के प्रारंभ में this is the question. What does he plant? Who plant a tree? And the poet himself replies to this question. और बाकी लाइन्स में पोट इस प्रश्न का उत्तर देता है. He who plants a tree plants many things. क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो एक पौधे को लगाता है, जमीन में उगाता है, वो केवल एक पौधा ही नहीं लगाता है, but he does various things. He does many things. The gentle sunlight, free breezes, beauty, म्यूजिक एंड हार्मनी. मतलब बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे काम करता है. जेंटल सनलाइट मिलती है, फ्री ब्रीज दैट मीन्स वी गेट एयर, फ्रेश एयर विच इज फ्री. वी डोंट हैव टू पे फॉर सनलाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा. एंड ब्यूटी, if there had not been any tree on this earth, the whole earth must have been a very dull and dreary place. It is the trees which make this whole universe, which make this earth a beautiful spot. Okay? तो ब्यूटी क्रिएट करते हैं म्यूजिक, बर्ड्स, फ्लावर्स, ट्रीज provide a kind of music and harmony. He ensures cool shade. Anybody who plants a tree, कोई भी व्यक्ति जो एक पौधा लगाता है, रोपित करता है,
इंश्योर कूल शेड। तो इसका मतलब क्या है, हमारी लाइफ में वो एक कूल शेड, छाया देता है ना। एक छाया का मतलब इंश्योरिटी करता है कि हमें ये पेड़ आगे चल के छाया देगा। टेंडर रेन, ट्रीज ब्रिंग रेन। These are the trees which bring rain on the earth. Trees are very helpful for bringing the rain. Definitely you know everything about it, that in deserted areas there is very scanty or little rainfall because there are no trees. But in those areas where trees are in abundance, there is a large amount of rainfall. बहुत ज्यादा बारिश होती है, like in hilly areas, eastern states of India. Okay, तो trees bring shade, provide tender rain. He leaves a rich legacy for the coming generation. और वो व्यक्ति जो वृक्ष लगाता है वो क्या करता है, लीव्स अ रिच लेगेसी। लेगेसी मीन्स प्रॉपर्टी, हमारे लिए एक प्रॉपर्टी, वसीयत, वेल्थ छोड़ जाता है। कमिंग जनरेशन दैट मीन्स आने वाली पीढ़ियों के लिए। जो भी व्यक्ति वृक्ष लगाता है वो अपने पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए एक प्रकार की हेरिटेज, रिच हेरिटेज छोड़ जाता है। He who plants a tree is conscious of the growth and development of his country. जो भी व्यक्ति कोई प्लांट लगाता है वो व्यक्ति क्या करता है, is conscious of the growth. Conscious means aware. उसे इस बात का ज्ञान होता है, किस बात का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री, कि वृक्ष के लगाने से उसके देश की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा और प्रोग्रेस होगी, उसका कंट्री प्रोग्रेस करेगा। ओके, ही एंड इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, ट्रीज आर आवर बेस्ट बेट फॉर बेटर एनवायरमेंट एंड ग्रोथ। ट्रीज हमारे लिए सबसे अच्छी क्या है, बेट कंडीशन है। बेटर एनवायरमेंट दैट मीन्स गुड एनवायरमेंट और गुड सराउंडिंग, क्लीन सराउंडिंग के लिए ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर सिंबॉलिक, सिंबॉलिक मीन्स सिंबल, दे रिप्रेजेंट, ट्रीज सिंबलाइज, ट्रीज रिप्रेजेंट किस चीज को, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। द पोट दस परसुएड्स अस, इस प्रकार से यहाँ राइटर हम सबको परसुएड करता है। परसुएड मीन्स एडवाइज करना, मेक समवन एग्री टू प्लांट ट्रीज, दैट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर trees in our locality. If we cut down one tree, it is advised that we should never cut down any tree. But if it is necessary to cut down single tree, we should plant at least 5 trees in its place. Okay? तो हमें सलाह देता है that we should plant more and more trees because they are very advantageous. And for the benefits of the coming generation, we should plant trees. Not only our present generation, but for the benefit of the coming generation. Okay, students, if you try to understand seriously introduction of the poem, definitely you will know everything about the poem. There won't be any problem to answer any type of question. Students, this is very, very necessary to understand the poem fully. Then there is no need to learn the answers of the particular questions by heart. यानी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर रटने की जरूरत नहीं होती है. You can write it on your own self if you know theme, topic well. Okay, so try to understand it seriously. Main points of the poem. Okay, now see main points of the poem. The poem focuses on the value of trees. अभी आपने पढ़ा ये पोम ट्रीज के वैल्यू
ट्रीज का वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, इस बात पर फोकस करती है। प्लांटिंग ट्रीज विल बेनिफिट ऑल इन सेवरल वेज, और ये भी बताती है कि ट्रीज को प्लांट करने से हमें कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। अ ट्री इज फ्रेंड ऑफ द सन एंड द स्काई। थर्ड पॉइंट क्या है कि ट्री सन और स्काई का फ्रेंड है, दैट मीन्स इट प्यूरिफाइज एयर, इट क्लीन्स द एटमॉस्फेयर। ओके, इट इंश्योर्स कूल ब्रीज। ट्री क्या करता है? कूल ब्रीज, हमें ठंडी हवा देता है। कॉन्जिनियल एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। कॉन्जिनियल मीन्स प्लीजेंट, ओके, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर। अगर ट्रीज है तो हमारा एटमॉस्फेयर प्लीजेंट होता है। इन डेजर्ट यू नो वेल देयर इज वेरी हॉट एटमॉस्फेयर, बहुत ज्यादा हीट होती है ना, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स आर ट्रीज। एंड और क्या होते हैं? एंड म्यूजिक, हार्मनी, मेनी अदर बेनिफिट्स फॉलो। Besides these benefits, there are so many advantages of planting trees. हमें बहुत सारे इसके एडवांटेजेस लाइफ में मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स, बहुत सारी चीजें that are obtained from the trees. That's why we should plant more and more trees, and trees should not be cut down. Cool shade and tender rains in summer. Shade देते हैं, that means shadow, समर में। एंड ब्रिंग रेन, रेन लाते हैं। सर्व एज लिविंग लेगेसी, और हमारे लिए एक लिविंग लेगेसी, सजीव आदर्श वसीयत होते हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी ये ऐसी हेरिटेज है जो आने वाली पीढ़ी को मतलब बेनिफिट पहुंचाती है। अ पर्सन प्लांटिंग ट्रीज डज अ सिविक गुड, और जो भी व्यक्ति एक ट्री को प्लांट करता है वो बहुत सारी सिविक ड्यूटीज परफॉर्म करता है, नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करता है, एक राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को निभाता है। ओके, ही इंश्योर्स ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री। If anybody plants one tree, that means he is a responsible citizen of a country and he ensures growth and development of a country. Planting a tree comes to planting a nation. Planting a tree means planting a nation. एक वृक्ष का लगाना मतलब है कि एक व्यक्ति एक राष्ट्र को पाल रहा है, एक राष्ट्र को पोस रहा है। Okay students, these are the main points of the poem. Now students, see next topic, the poem in detail. Poem in detail. Definitely if you read these points seriously, there is no need to read the poem at all. Definitely you will know everything, but I will also explain the poem. But first of all, try to understand these things. The poem in detail. The Heart of the Tree by Banner is an inspirational poem. ये पोम हार्ट ऑफ द ट्री एक बहुत ही इंस्पायरिंग पोम है जो हमें प्रेरणा देती है, इंस्पायर करती है। Its message is of great relevance in modern times. Relevance मतलब लॉजिक, न्याय संगत। इस पोम का जो मैसेज है वो बहुत ही जस्टिफाइड है। प्रेजेंट सिचुएशन में, मॉडर्न टाइम्स में द मैसेज इज जस्टिफाइड। ओके, बहुत ही न्याय संगत है। द पोम ओपन्स विद अ क्वेश्चन विच इज रिपीटेड थ्राइस। ये पोम हर स्टेंजा, ईच स्टेंजा बिगिंस विद अ क्वेश्चन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। What does he plant who plant a tree? This is the line, beginning line of each stanza in this poem. The poet himself provides the answer to this question, और राइटर खुद इस प्रश्न का उत्तर देता है in metaphors. Metaphors, a kind of figure of speech. Okay? This is a figure of speech. Definitely you must have read about
the figures of speech. Metaphor is a figure of speech in which comparison is made between two different objects, and it is so deep that thing compared is taken as the same. So there is use of metaphor. A tree is friend of the sun and the sky. It is said that tree is the friend of sun and sky. Sun और sky का friend है, because tree provides us shadow, cool shade, and sky that means brings rainfall to the earth. In other words, it ensures healthy environment. एक ट्री हमारे लिए हेल्दी इन्वायरमेंट इंश्योर करता है. हेल्दी इन्वायरमेंट दैट मीन्स गुड इन्वायरमेंट. इट इंश्योर्स कूल फ्री ब्रीज. कूल और फ्री, हमें जो एयर मिलती है बिल्कुल फ्री मिलती है, विदाउट कॉस्ट. वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस कूल ब्रीज और एयर. The place where it stands is akin to heaven. The place where it stands यानी जहाँ पर ट्री उगता है वहाँ की जगह कैसी होती है? akin to heaven, like heaven. यानी गर्मी में जब भी हम एक सैडोवी ट्री के नीचे बैठे तो हमें कितनी राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है. It looks as if we are in heaven. As it shelters birds, one can hear their sweet songs in twilights. Trees provide shelter to many birds. Okay, and these birds, when make twittering sounds, they create a kind of music, and this music soothes our heart and ear. ये म्यूजिक सुन करके हमें प्रसन्नता होती है. तो trees not only provide shelter, but the birds which live in the trees provide us a kind of music and sweet harmony. So one who plants a tree creates a congenial atmosphere. इसलिए जो भी व्यक्ति एक ट्री को प्लांट करता है वो एक बहुत congenial, that means pleasant atmosphere क्रिएट करता है all around, in which there is a peace. एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां चारों ओर पीस होती है, शांति होती है, कंफर्ट होती है, रेस्ट होती है, ब्यूटी, म्यूजिक एंड हार्मनी. ओके, देन द पोट गोज ऑन टू इनुमरेट सेवरल अदर बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग अ ट्री. इसके बाद पोट बहुत सारे अदर बेनिफिट्स का डिस्क्रिप्शन करता है कि ट्रीज don't provide only shade, bring rain, cool breeze, but there are some many other useful benefits. They provide several things to us. It causes rain, it gives seed, seeds में मिलते हैं, and buds to bloom into flowers, buds, and then buds convert into flowers. We get fruits, flowers, timber, so many things. Gum, resin, latex, rubber, etc. A tree is symbol of forest heritage. एक वृक्ष फॉरेस्ट हेरिटेज, जंगल की विरासत का एक सिंबल है, प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव है. It can serve as a living legacy for the next generation. Tree next generation के लिए एक living legacy होता है, living wealth होता है. It is the symbol of joy. Tree आनंद का प्रतीक होता है for our still born children. जो हमारी बच्चे जन्म लेते हैं उनको आनंद मिलता है. Thus trees link our present and future. They are link between present and future generation. Then the poet says that he who plants a tree does civic good. जो भी व्यक्ति एक प्लांट लगाता है he does the duties as a good citizen for a nation. All his neighbors feel blessed and benefited. If somebody plants a tree in neighborhood, then not only that person get the benefit, but most of all the people living in the neighborhood and some other people may also get benefit of that trees, birds, animals, etc. In other words, country's growth and progress depend. एक कंट्री की ग्रोथ और प्रोग्रेस
ट्रीज पर डिपेंड करती है, वेल्थ ऑफ ट्रीज पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री की ट्रीज वेल्थ कैसी है। जहाँ जितने ट्रीज होते हैं वो कंट्री ज्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लाइमेट अच्छी होती है, वो कंट्री वेल्दी होता है। He who plants a trees yearns for the welfare of his country. जो भी कोई एक ट्री लगाता है उसके मन में yearn, that means desire, देशभक्ति की इच्छा होती है, देश के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, देश के कल्याण की इच्छा होती है। In fact, the planting a tree, he plants a nation. By planting a tree, that means he is planting a nation. Okay, students. These are the points I explained to you about the poem in detail from the workbook. Now in my next video I will explain the poem from your book. Okay, so revise this topic which is explained today. Introduction of the writer, introduction of the poem in detail, and main points again and again. Definitely if you have revised it, you will know everything about the poem. There is no problem to answer any questions. In workbook there are questions which are asked in